Let's now move on and talk about the other big story of the day, and this is about avian influenza or bird flu, which is slowly spreading its wings. Why we are saying it? Because till about yesterday, there were only 9 states and union territories that had confirmed avian influenza. Now, Uttarakhand has become the latest state to confirm bird flu amid nationwide efforts to contain the spread. While Delhi has banned imports of live birds and the biggest wholesale poultry market in Ghazipur has been temporarily shut down, bird wing of Jaipur Zoo has been closed after few birds were found dead there. Now, their samples have been sent to Bhopal lab to find out whether they also died due to avian influenza or there was some other reason. Arvind, my colleague, is joining us on the broadcast more on this. Arvind, good morning. Can you tell us what is the exact status of avian influenza in Rajasthan? Yes, Hina, avian influenza in Rajasthan is spreading slowly but surely. What the official status says is that 15 districts out of 33 in Rajasthan have been affected by the bird flu, and the cases have been confirmed in 15 districts. On Monday, Sirohi and Tonk were the 2 districts where confirmed cases of avian influenza were found. What happened in Jaipur is that 3 ducks and a stork was found dead in the bird wing of Jaipur Zoo, and that is why the Jaipur Zoo bird wing has been closed indefinitely till the situation clears out. But as far as the official status of Rajasthan government is concerned, that bird flu has been spreading in crows, peacocks and wild species of bird. But so far, officially no cases of bird flu in poultry has come, and that is why no ban on sale of egg or chicken has been implemented in Rajasthan. But what authorities tells us that they are looking the situation very closely and would take steps if it spreads in poultry and eggs also. All right, Arvind, appreciate you joining us with all of those details. We're getting a few political reactions as well over this. Let's listen in. देश के अंदर 90% पोल्ट्री फार्म छोटे छोटे 5,000 के अंदर के किसान हैं, 10% होगा जो बड़े किसान हैं। ऐसी स्थिति में जब हम 22 अक्टूबर को ही एडवाइजरी जारी किया, अगर राज्य सरकार या दिल्ली सरकार उस एडवाइजरी के तहत अपने को अलर्ट रखता तो ये पैनिक ना होता। कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पशु विश्व संगठन ने कहा है 70 डिग्री टेम्परेचर पर खूब बढ़िया से पका के खाएं। अब भारत का खाना जो भी पकता है ऑलमोस्ट पूर्ण पकाते हैं तो 70 से ऊपर ही रहता है। अभी तक कहीं से कोई इस तरह की चिंता की बात नहीं है। अभी कुछ सैंपल्स और भेजे गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आनी है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार पूरी कोशिश में है कि इसके स्प्रेड को रोक लिया जाए। अभी तक कहीं से भी इस तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। प्रिकॉशन के तौर पर दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था। अभी सुबह एक और ये डिसीजन लिया गया है कि जो पैकेज्ड मीट आता है, चिकन आता है, पैक्ड चिकन, प्रोसेस्ड चिकन, इसको भी दिल्ली में बाहर से लाके नहीं बेचा जा सकेगा।